हे गुड इवनिंग। हम लोग आज बात करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वेल आई नो आप लोग क्या बोलते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इज दैट व्हाट द चैप्टर्स एनसीईआरटी में? वेल यू नो दिस बेटर आई डू। हम लोग कोचिंग लिंगो में जनरली जीओसी ही बोलते हैं, राइट? सॉरी, that's better. All right, so yeah, GOC, that's what we're going to do today. NCERT, this is where we are at. और इस वीकेंड में हम लोग खत्म करेंगे जीओसी ऑन द जेई चैनल। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे? ओ, हाइड्रोकार्बन्स। ऑलराइट, एंड देन ऑन द नीट चैनल वी कंटिन्यू डूइंग ऑल ऑफ दिस ऑल द वे टू 16th इज व्हेन वी आर गोना रैप अप पूरा सिलेबस। सो आर यू रेडी? शैल वी गेट स्टार्टेड? शुरू किया जाए आज की कहानी। मेरी आवाज साफ आ रही है, राइट? यू विल टू हियर मी एंड सी मी क्लियरली। गुड इवनिंग पंपा, तीर्थराज, अश्विनी, सुपर डुपर एंड नैना। हाय। Oh, wow, okay, all right. So, let's start off with something easy. An extension of chemical bonding. What are hybridization states of each carbon atom in the following compounds? Very doable. Okay, दो ही है इधर, तीसरा क्यों आ रहा है? 1, 2, 3, 1 because they are the same, and 2 and then 1 and then 2 and then 3 and then, well, let's just call it 1. ठीक है? इसका मुझे प्लीज बताइए क्या है स्टेट्स। Now, how do you know hybridization states? You know the deal, right? Count the number of sigma bonds plus lone pairs. Now, carbon में lone pair कम दिखने को मिलता है, unless you have like a, I don't know, carbanion or something like that, or a carbocation maybe. You know, that's when you look at maybe lone pairs. Otherwise, in this, where you've got no extra bond and stuff, I think it's very doable. Very doable. Okay, Piyush, right off the bat. Swadiptas, Divyanshi, hi, good evening. 1 sp2, 2 sp2. दो बॉन्ड्स नहीं, इसमें है 3 बॉन्ड्स, इसमें सिर्फ 2 बॉन्ड्स हैं, तो ये दूसरा वाला sp नहीं हो जाएगा? sp2 and sp, yes Saudipta, exactly. Piyush is saying sp3, sp2, sp2, बिल्कुल सही, और ये sp3, sp, okay, all right, we've got all of it. सब लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अश्विनी, तीर्थराज, पंपा, लवली। पहला वाला sp2 होगा, इसके हैं 3 बॉन्ड्स, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और एक pi bond, and this thing with this carbon. Now, why is this middle carbon sp? It has only 2 sigma bonds. ध्यान से देखो, लेफ्ट में एक और राइट में एक, ठीक है? इसलिए दिस इज sp। बाकी तो सब बहुत डुएबल है। ये CH3 वाला sp3 हो गया। सिमिलरली इसका एक H, एक इधर और एक कार्बन के साथ बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। दिस इज sp2। अगेन 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका भी sp2। This guy, both of these carbons, CH3 whole twice, both of them are sp3. This CO is basically a double bond, which is 1 plus 2. So again, 3 sigma bonds. This is sp2. And if you go here, sp2, sp2, and sp. Why is it sp? ध्यान से देखो इसको, ठीक है? This is CH, ये ना, तो यहाँ पे है एक बॉन्ड एंड एक और बॉन्ड, तो this is why this one right here is sp। और ये तो हमारा बेंजीन रिंग है, इसमें सारे हैं sp2, ठीक है? वेरी इजी क्वेश्चन टू स्टार्ट थिंग्स ऑफ। पीयूष ने पर्दाफाश कर दिया सुपर डुपर का। नव्या द्विवेदी D2 sp3। आर यू सेइंग दैट जस्ट सो दैट आई टेक योर नेम आउट लाउड? बिकॉज मुझे तो सिंपल, वाह सुपर डुपर। Navya, I don't follow. I'm being very straight with you. I have no idea what you're talking about. D2 sp3 कहाँ से आया? Any doubts in this? Right? This is very doable. I really hope कि इसमें से कुछ सवाल आया, but काफी unlikely है कि नीट में इस चीज से डायरेक्टली सवाल आए। Maybe you will get a question where you have to count the number of bonds, count the number of, you know, this bond, that bond. चलो अगला सवाल उस पर कर लेते हैं। Yeah. First, let's indicate कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है इन सब मॉलिक्यूल्स में, ठीक है? तो ये वाला है बेंजीन। What is this? Looks like I've deleted something in the middle. Yeah, look, or space extra आ गया। C6H12 can be one of two things, right? C6H12 can be a straight chain hydrocarbon with one pi bond, or it could be a cyclic compound. So I'm giving you a hint and saying कि ये वाला इसको cyclic मान लेते हैं। Let's assume कि ये cyclic है, ठीक है? Because cyclic और एक डबल बॉन्ड दोनों का CnH2n होगा,
ठीक है, सो लेट्स अस्यूम कि इट इज साइक्लिक। ये क्या है, CH2Cl2, ठीक है ठीक है। कंजुगेटेड डबल बॉन्ड एलीन बोलते हैं ना इसको, इसको आयन बनाओ तो एलीन हो गया। नाइट्रो, मीथेन, ये क्या है, व्हाट इज दिस, HCO NH, ओ अमाइड, ओके अमाइड लिंकेजेस इन बायोमोलिक्यूल्स जो आप लोग पढ़ते हो। ऑल राइट, so shall we do this now, shall we go ahead and count? So the easy thing that I find to solve a question like this is to draw the line structures. तो आप लोग अगर आंसर दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आंसर नहीं दे रहे हो तो इसको ध्यान से देखो। आर यू कन्विंस्ड अबाउट दीज लाइन स्ट्रक्चर्स? आई टोल्ड यू साइक्लिक होगा, ठीक है। CH2Cl2 कैन बी लाइक दिस, दिस इज द एलीन बिजनेस, दिस इज नाइट्रो, दिस थिंग, एंड दिस इज द अमाइड। यहाँ पे बनाया नहीं है बट देयर इज एन H over here, राइट, HCO NH, and यहाँ पे C है तो H, you know, that's how the line diagrams look like. Okay. Oh, Piyush giving us the name C6H12 cyclic. Yes, Ashwini, we are assuming it's cyclic. Okay. Benzene 12 sigma 3 pi 6 sigma 3 pi. Piyush और तीर्थराज दो अलग अलग चीजें बोल रहे हैं। Are you sure, तीर्थराज? तीर्थराज, you are counting single and double bonds, you are not counting sigma bonds. sigma bonds में आपको हाइड्रोजन भी तो देखना पड़ेगा। अब देखो, अब हाइड्रोजन बनाया जाए, लाइन डायग्राम में चक्कर ये है कि इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, आप इसमें हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं करते हो, बट टू गेट सिग्मा बॉन्ड्स यू हैव टू शो द हाइड्रोजन। सो दीज ब्लू लाइंस आर ऑल हाइड्रोजन। ब्लू येलो से क्यों लिखे, ब्लू ब्लू से ही लिखना है। दीज आर हाइड्रोजन एटम्स and hence each of them is going to be a sigma bond. Once you have that, first वाले में you get 3 pi and 9 sigma. How 12 sigma? 6 and 6. Oh, you're right. It's not 9. It is 12. सही, thank you, thank you. It is going to be 12 sigma. Like, wait, hold on. कुछ गड़बड़ लग रहा है, दाल में कुछ काला है। बिल्कुल सही, मैंने जो बोला exactly वही चीज हुई। Ritesh is no longer part of the system. Yeah, you've got me. So hold on. Let me just correct that on my back end. Where is this beautiful slide? Slide number 10 is where we are at. Slide number 10. It's all right. Hold on. Give me a second. बाकी आप लोग आगे का बताओ. While I fix this. Draw 12. Yes, 6 plus 6. बिल्कुल सही बोला आपने. Thank you. Everyone's convinced how this works out? Yeah? बाकी का बताओ. I'm gonna go back to my, yeah, all right. 18 sigma, 18 sigma. हो सकता है 18 sigma, हो सकता है. Okay, lovely, lovely, lovely. Hey Divyanshu, what's happening? Oh, ये erase भी नहीं होगा. Okay, maybe अभी erase हो जाए. Yeah, okay. 3 pi, okay. इसमें pi है ही नहीं. No pi, 18 sigma. बिल्कुल सही, 18 sigma. इसमें है 4 sigma. This is very easy. Yeah, nothing complicated here. Yes, Ashwini, absolutely right. Divyanshi, yes, that was 12. What about this one? There's 2 pi here, clearly. And बाकी sigma तो count कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sigma. 2 pi, 6 sigma. होता है तीसरा, don't worry about it. The main thing is to figure out what happens after this. Yeah. Number 5 is, oh, number 5 is 8 sigma, 1 pi. Okay, 8 sigma. Are you sure? 1, 2, 3, 4, 5, 6. मुझे 6 sigma दिख रहा है. Number 5 is CH3NO2. Now this one's interesting. Maybe we should talk about this. Piyush saying 8 sigma 1 pi, 6 sigma 1 pi. Ashwini बोल रहा है. Ashwini और Piyush are giving me two different things for 5. I think 1 to 4 तो sort out हो गए. 1 to 4 में everybody is giving me similar answers. ठीक है. Number 5. Let's talk about number 5 in a little bit of detail. Number 5. This coordinate bond, do you count it as a pi bond or a sigma bond? I feel we should just count it as a sigma bond. Yeah. Just count it as a sigma bond. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. If you do that, you get 6 sigma and 1 pi, right? अगर तुम उसको डबल बॉन्ड बनाओगे, then it becomes 2 pi and also messes things up a little bit. Formal charge वो सब डालोगे तो it becomes a little messy, right? Is this all right? And last वाले में there's only 1 pi and बाकी 8 हैं सारे sigma. कैसे 8? 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Cool? No problem, Piyush. कोई नहीं. ओ अच्छा, आपने 6 का दिया था. ओके पीयूष, हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली. 8 सिग्मा. NO counts as sigma bond. 5 no counts.
NO counts. Okay, good. Easy question. बहुत जल्दी कर लिया हम लोगों ने. लंबा सा सवाल. अब लगे हाथ सबका नाम भी बता दो, नामकरण किया जाए. That is the next point, no? Please tell me the names of all of these. What are the names of all of these compounds? That's the next exercise, right? Benzene, cyclohexane, 1, 2, dichloro, ethane. डाइक्लोरोइथेन में ठीक है 1 2 डालना जरूरी है, 1 1 भी हो सकता है. ये वाला जस्ट एलीन होगा. व्हाट इज दिस? दिस इज नाइट्रोमीथेन. लास्ट वाला इज इंटरेस्टिंग. एन मिथाइल फॉर्मामाइड. एन मिथाइल फॉर्मामाइड. आई फील इसमें आई हैव टू राइट 1 2 डालना पड़ेगा बिकॉज अदरवाइज इट विल आल्सो बी 1 1, राइट? बिकॉज इट्स इथेन. नहीं इथेन नहीं, मीथेन है क्या? अरे मीथेन है, इथेन नहीं है, मीथेन है, सॉरी. ये डायग्राम लग के मुझे भी लग गलती से कि ठीक. हाँ, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग 1 1, एक ही है. डाइक्लोरोमीथेन, नाइट्रोमीथेन एंड एन मिथाइल फॉर्मामाइड. व्हाट डज दिस एन मीन? मतलब नाइट्रोजन में एक इंस्टेड ऑफ एच, अमीन का एक एच चला गया. अमीन इज एच एच, राइट? So what we are doing is we're replacing one of these H with a CH3 group. That is what N-methyl means. If you write N dimethyl, that means दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे. When we do amines, maybe we'll look at this nomenclature एक बार फिर से about amines का nomenclature in detail. Prop 1,2-ine. Prop 1,2-ene. Propene कहाँ है यार? ओ अच्छा, एलिन. एलिन को prop 1,2-diene बोल रहे हैं आप, ठीक है. It'll be prop 1,2-diene, ना? If you want to do that, it's going to be prop 1,2-diene, correct? Yeah, Ashwini, it'll be diene, right? All right, cool. चलो, since हम लोग nomenclature की बात कर रहे हैं, let's do that. सबका IUPAC नेम बनाते हैं. बिल्कुल सही. Everyone's on track. I'm going through this part quickly because it's easy. You don't have to spend too much time on it. If you want me to talk about anything, let me know. I can explain. But I don't feel you need any sort of hand holding on nomenclature. Nomenclature काफी doable है. But as always, if you have any doubts, ask me. IUPAC names of all of these. Again, 6 more compounds. बहुत हो जाएगी पूरी practice इसमें. What is this? It's got a benzene ring. It's got a propyl attachment to it. 1 2 3 और 1 2 3 कैसे करोगे? नंबर्स डिसाइड करो. Now this can be done in 2 ways. I can do this as cyano something, or I can also do what's it call it? I can call it nitrile and include this in 1 2 3 4 5. I can do that. Okay, ये तो सिंपल है. 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. मिथाइल 2. What about this? 1 2 3 4 5 6 7, सिंपल है. 1 2 3, and this is an aldehyde, so I'm going to say propanol, right? This is the easiest one. I'm going to write this first. 1 chloro. No, not 1 chloro. 1 2 1 2 3 3 chloro. Propanol. One-ol. I don't know. Can you say propanol or propanol? Okay. Propyl benzene, says Ashwini Kumar. Let's start with that one. Okay. Ashwini Kumar starting us off with propyl benzene. I like propyl benzene. You know what? NCERT में, when I was looking at the solutions, it was weirdly given something like 3 phenyl propane. I'm like, bro, that's not cool. I'm like, ये मुझे अजीब लग रहा है, तो मैंने वो नहीं लिखा. Although I found online कि ये सब लिखा होता है, I'm like, bro, no, I'm not doing this. Maybe if it's correct, then I don't know, but I found this to be more comfortable. Propyl benzene. I like that. देवांशी benzene है ना ये तो. देखो propyl phenyl. Okay. Propyl phenyl. Teachers, can we say that? Cryptography, welcome. I feel you should say propyl benzene. Gamer boy, focus on the session. Otherwise, bye. Ashwini, 2-methyl pentane nitrile. I like what Ashwini is saying for the next one. Sir, मुझे पता नहीं है कि आप ऑर्गेनिक भी पढ़ा सकते हो. Oh, thanks, super. That's nice of you to say. मुझे भी पता नहीं था, super duper. Thank you. 4 is 3 bromo 3 chloroheptane. Okay. 2-methyl pentane nitrile. I like what Ashwini is saying. Ashwini is saying 2. Okay. How are we counting this, Ashwini? 1 2 3 4 5, or are we going 1 2 3 4 5? What did Ashwini do? 2-methyl pentane nitrile. 2 नहीं होगा ना Ashwini? Either way it will be 3, right? Ashwini, think about this. Benzene parent chain होगा ना Ashwini? I agree. Exactly. That's exactly why मैंने भी propyl benzene लिखा है. I don't know. Online people saying 3 phenyl propane. I'm like, no, I don't like that. मुझे तो पसंद नहीं है, so I didn't write it. Yeah, but I'm a noob at organic. But I've studied whatever resource I have, and I feel this should be good. Anyway, this should be 3, right?
प्रोपाइल बेंजीन तो हमारा हो गया, एंड वी शुड स्टार्ट द नंबरिंग हियर, 1 यहां पे शुरू करना चाहिए. सो आई थिंक इट शुड बी 3 methyl. Or cryptography saying 1 cyanide. Oh, cryptography. The reason why we can't do 1 cyanide, if we do 1 cyanide, then it's not pentane anymore. Then it becomes butane. Cryptography. Suno. It's either 3 methyl pentane nitrile, or I don't know if this one's correct or not. You guys tell me. If I say 1 cyanide, cyano, right? Cyanide, jo bhi bolo. Cyanide, cyano. You guys tell me. 1 cyano, 2, 3. Yeah, 3 methyl butane, but I don't like this very much. Again, I'm putting big question marks because I'm not so sure about this one. I like this. I like this one. This is simple. So I like this. 3 methyl pentane nitrile is something that I'm chill with. 1 cyanide, 3 methyl butane sounds a little weird to me. I'm not so sure about that one. Yeah. 3 methyl pentane nitrile. Okay, pampa, super duper. A lot of people giving me that pent 1 nitrile. Last का chloropropanyl. Okay. Propanol होगा ना? Propanol. All है यहाँ पे. Wow, this is chaotic, but cool. This is lovely. I like it. You're also participative. लगता है आपको ऑर्गेनिक में, यार तुम लोग फिजिकल में इतना पार्टिसिपेटिव नहीं होते, फिजिकल में थोड़ा मैथ से डरते हो. इट्स ओके, आई डोंट टेक दैट पर्सनली. अच्छी बात है, एज लॉन्ग एज यूर एक्टिव. 2,5 डाइमिथाइल हेप्टेन. सिंपल है ना ये तो. 2,5 I take and not the other way around, because the other way around I get 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. The other way around if I do, I get 3, 6. इसका sum हो गया 9, इसका sum हो गया 7. So this is better. Okay, and not 3, 6. Cool. So next वाले में again for the same reason of the Locant's rule. Yeah, Locant का sum should be the smallest, right? From that idea, I have given this number. So this is going to be 3 bromo and then chloro, because alphabetical होना चाहिए. Sometimes students write this as 3 chloro and then bromo. Alphabetical होना चाहिए. That's all there is here, right? So 3 bromo, 3 chloro, heptane. Then this one, second last one is 3 chloropropanyl, right? I think अब ये वाला बोल रहे थे, जो लास्ट बोल रहा था ऑर्गेनिक इज इजी. या तीसरा, आई एग्री. सर लास्ट का एफ नहीं देखा. हाँ ठीक है पीयूष, नो टेंशन. 3 क्लोरो ब्रोमो, सुपर डुपर. आदित्य तुमको 3 फिर से लिखना पड़ेगा. 3 ब्रोमो एंड 3 क्लोरो. खा मत जाओ, डोंट ईट दिस प्लीज, डोंट फॉरगेट. या डोंट फॉरगेट द सेकंड 3. ऑलराइट, कूल. लास्ट वाला ये 3 क्लोरोप्रोपेनल हो गया, exactly what Piyush said. This guy is dichloro. Here you need to be careful. Yeah, 1,1 you got to specify सबका. 1,1 dichloro 2 ethanol, or ethane 2 all, both works. Yeah, or you can also go ethane 2 all. Yeah, both work. Okay, बढ़िया, मजा आ रहा है. JEE is best than NEET. This is so much easy. Gamer boy, एक बात बताओ, तुमने जेई कब दिया है तुमने जेई, गेमर बॉय? नव्या, एब्सोल्युटली राइट. 3 क्लोरोप्रोपेनल, बिल्कुल सही. इट्स ओके आदित्य, नो टेंशन. 3 डाइक्लोरोप्रोपेन प्रोपेनॉल. प्रोपेनॉल नहीं है ना, ये तो इथेनॉल लग रहा है मुझे. डोंट शो द आंसर. अरे सवाल हो गया. एथेनॉल. या लेट अस सॉल्व क्रिप्टो. अरे आई एम लेटिंग यू सॉल्व, आई एम गिविंग यू सो मच टाइम. तो खत्म हो गया, इट्स ऑल डन. ओके, क्रिप्टोग्राफी श्योर. ठीक है, अगले वाले से आई विल गिव यू टाइम टू सॉल्व. आगे बढ़ा जाए, मूव ऑन. या फन, राइट? दिस इज इजी. केमिस्ट्री इज इजी. ओके, which of the following represents the correct IUPAC name for the compounds concerned? What is this space? Let me fix that space. 2,2-dimethyl pentane or 2-dimethyl pentane, 2,4,7 trimethyl octane or 2,5,7 trimethyl octane, 2-chloro 4-methyl pentane or 4-chloro 2-methyl pentane, but 3-ine 1-all or but 4-all 1-ine. In सब में my hint is draw line diagram, बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, this structure. Draw this, then you figure it out. Solve crypto. Go ahead. No problem, अश्विनी. लास्ट में क्लोरीन को 1-1 कैसे मिलेगा? ऑफ है ना. ओके, व्हाट इज ऑफ है ना? समझा नहीं आपकी बात. Cl2 CH है. ओके, डू यू वांट मी टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर? ओके, CH1 2, यहाँ पे OH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, राइट? सो हियर you are saying don't do 1-1,
do 2-2. Is that what you're saying? You're saying do 2-2. Is that what you're saying? That's a good question. We'll figure this one out now. Piyush? I feel that chloro takes precedence over alcohols. I'll show you. वो मैं दिखाता हूँ. तू वो दिखाता हूँ. I'll show you that. Let's go to this question. मैं NCERT में आपको ढूंढता हूँ तब तक इसको आप करो. Okay. A is 1. What about B? Okay. Navya is saying A is 1. Divyanshi is saying A is 1. Teethraj is also saying A is 1. What about B? Let me open up NCERT to show you that rule. अब क्या करें? इसमें तो बस रूल्स जानना जरूरी है. अगर रूल याद नहीं आ रहा है तो भाई थोड़ा बस पढ़ना ही पड़ेगा. What more can we do there, right? Hold on. What was that rule? Now what is it? General Organic Chemistry PDF NCERT. खोला जाए PDF. क्लोरो नहीं, क्लोरो से नहीं आया. नॉमेनक्लेचर. अरे भाई साहब खुल जाओ सिम. यार ब्रेव इज really good. It's really good browser, but कभी-कभी बैठ जाता है बेचारा. Like right now. It won't search NCERT, bro. I don't know why. It just doesn't search for NCERT. Hey, I already have this saved. आंसर बताओ तुम लोग, तब तो मैं NCERT खोल रहा हूँ आप लोग के लिए, because somebody had some doubt about chloro versus all. I feel like chloro takes preference over everything else, but we'll just check that. एक बार चेक करने में क्या कोई हर्ज नहीं है. 0 हर्ज, bro. Where did it go? KECH 205. KECH 205. भाई ये तो बोल रहा है कि ऑलरेडी है. कहाँ है? Oh, यहाँ है. ओके. एज खुल जा सिम. कंट्रोल F. नॉमेनक्लेचर. ओके. क्लोरो. I read this. I checked this part, so I remember this explicitly. But it's cool. I don't mind looking at it again. For example, oh, prefix होगा, but 1 होना जरूरी नहीं है. I understand what your doubt is. Yeah, it could be 2-2. It could be 2-2. I understand what you're saying. You've written all the answers in staggered form. Okay. Oh, principal function group. ठीक है Piyush. I understand. ठीक है. I agree with what you're saying. 2-2. Yes, you're right. I will fix this. This is 2-2 dichloroethanol. सही बोला आपने. This should be 2-2 and not 2. Principal function group. All right. Thank you for that. All right. इस वाले का क्या आंसर है? 2A is this thing 2,2 dichloroethanol. Yes, this is correct. Okay. अगला वाला कोई बोल नहीं रहे. नव्या, गुड इवनिंग. रमेश भाई साहब, हम आंसर कोई देता नहीं. गुड इवनिंग काहे बोल रहे हो भाई? इवनिंग कब की हो चुकी है? 6:30 बजे से क्लास शुरू हुई. क्या अभी गुड इवनिंग बोल रहे हो? Give me answers or bye. Okay, B is 2, says Pampa. All right, cool. What about the rest of you? B is 1, says Devanshi. Okay, cool. Which browser do you use? Crypto I use, Brave, Edge, सब use करता हूँ मैं. OH, bro, bye, Ramesh. No, not happening. Divyanshi is saying C is 1. Okay. 2,2 dichloro 1 all. बहुत टाइम दे दिया आपको सॉल्व करने के लिए. Shall I go ahead and show you the solutions now? C is 2 chloro 4 methyl pentane. Okay. Yeah. Okay. For the same reason as before, chloro will take more of this thing than methyl. Sure. Okay. Because C comes before M. Butane वाला देखना है. Butane वाला देखना बाकी है. खैर, if I do this thing where this is 2,2 dimethyl, yeah, makes more sense. You need to have 2,2. If I just write a 2, what happens to the other 2? This was easy. This is definitely this one. That's true. Okay. Next वाला देखते हैं. Trimethyl octane. So I have drawn 8, right? Oct हो गया. 2, 4, 7. 2, 4, 5, 6, 7. Okay. 2, 4, 7 is this first one. 2, 4, 7. Is this the smallest? Or if I swap it around, it becomes 3, 5, and 7. They're both good, but here is the problem or the solution per se, right? The number is smaller, lowest locant and all of that, जो भी बोलते हैं उसको, right? Smaller number. Okay. What about C? C में है, again, let's draw the structure. Yeah, 2 chloro 4 methyl pentane, 2 chloro 4 methyl pentane versus 4 chloro. Yeah, we've got this. Yeah, the focus is going to be on the alphabetical order, and chloro takes preference over there. Hence, that must be the right answer.
डी में फर्स्ट होगा, डी में फर्स्ट, सब लोग, एवरीवन गॉट टू डी, देवांशी, पंपा, तीर्थराज ऑल गॉट टू डी. लोएस्ट सम, यस, लोएस्ट लोकेंट रूल, दैट्स व्हाट आई एम कॉलिंग लोएस्ट लोकेंट. लोकेंट को वही लोएस्ट सम लेके अश्विनी जो बोल रहे हैं एग्जैक्टली वही है. ब्यूट 3 आइन 1 ऑल. ओके, लेट्स ड्रॉ दिस. दिस इज 1 2 3 4. ओके, ब्यूट 3 आइन मतलब तीसरे और चौथे के बीच में आइन हो गया, 1 ऑल हो गया. लुक्स लाइक दिस वर्क्स. Why? Because again, अभी हमने देखा कि OH should take preference. OH should take preference. The other option would be to count it this way. Yeah. So the all group or the OH group takes preference. Okay. Lovely, 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 lovely. चलो, हमने nomenclature पूरा बहुत डिटेल में कर लिया, अब आगे बढ़ा जाए. Let's move on to the second part of this GOC वाला bit, where we talk about stability of these cations, anions, etc. What are the effects that you've got to keep in mind? Yeah, something pulls electrons or pushes electrons. Broadly यही है. दूसरी चीज है रेजोनेंस का इफेक्ट. तीसरी चीज है हाइपरकॉन्जुगेशन. राइट, हाइपरकॉन्जुगेशन इज मोस्ट रेलेवेंट व्हेन यू हैव कैटायंस. और कुछ बचा? तीन चीजें हैं. आई प्लस आई माइनस आई इफेक्ट जिसको बोलते हैं, वही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, डोनेटिंग. रेजोनेंस इफेक्ट है, विच मीन्स की इलेक्ट्रॉन पेयर अगर जो है सेम प्लेन में है तो उसके साथ इंटरेक्ट करता है, इट कैन मूव अराउंड, ओके, फिजिकली मूव अराउंड, राइट. इन दीज व्हाट डू यू थिंक मैटर्स? लुक्स लाइक फ्रॉम द टॉप ऑफ माय हेड इसमें दो चीजें दी गई है. फर्स्ट चीज, इट्स अ नेगेटिव साइन दैट इज ओवर हियर. हाउ डू वी डिसाइड इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? अगर वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा नेगेटिव है तो वो रिएक्ट कर जाएगा. अगर वो नेगेटिव चार्ज को हम लोग कम नेगेटिव करें समहाउ, मतलब उन इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लें, तब वो स्टेबल होगा. एंड अगेन मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूं. पॉजिटिव में होता कि पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन दे दो, उसको इलेक्ट्रॉन दे दो, वो सेशिएट हो जाएगा. यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं हम लोग बिकॉज नेगेटिव चार्ज उसको, और यार लेट इट स्प्रेड आउट, लेट इट स्प्रेड आउट. सो लुक एट दिस नाइट्रो ग्रुप. दिस स्ट्रांगली पुल्स इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. एंड यहां पे नाइट्रो ग्रुप नहीं है, सो जाहिर है कि दिस is going to be more stable because it decreases the charge density on the oxygen ion, specifically this guy right here. Cool. Yes, तीर्थराज, अश्विनी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन. अब ये माइनस एम प्लस एम ये सब मुझे याद नहीं रहता है. पीयूष, एम कहां से आया? Would it be I? Count number of alpha hydrogens. Cryptography, I am a little confused. Alpha hydrogens has to do with hyperconjugation, and that has to do when you have a positive like a cation thing going, right? So why are we talking about that right now? I think NO2 pulls electrons. It's electron withdrawing group. So that would be minus I, right? Minus M. How did minus M come into this picture? मैं समझा नहीं, मुझे थोड़ा सिखाओ, because I'm also figuring out organic along with you guys. So how is it minus M effect? थोड़ा बताओ मुझे. It'll help me. It'll help the other students also, right? Mesomeric effect, resonance effect सेम ही है, right? माइनस एम मतलब क्या? माइनस एम मतलब क्या होता है? थोड़ा let's just elaborate there. What do you think? Right? I think this has to do with resonance, right? Mesomeric, it's okay, no problem. कोई चक्कर नहीं. इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये एम आई भूल जाओ. I will never use these terms. Everybody does. I don't care. I will not use it. मैं बोलूंगा सीधा साधा रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इट विल मेक योर लाइफ इजी इफ यू डू दैट. ठीक है, क्योंकि अदरवाइज यू मग एंड यू फॉरगेट. दैट इज अ प्रॉब्लम. Identify the reagents shown in bold in the following equation as nucleophiles or electrophiles. बोल्ड तो नहीं है बट ठीक है, कलर आ गया है. CH3CO प्लस है, CN माइनस है, OH माइनस है. Now, what is a nucleophile? Something that likes nucleus. मतलब likes positive charge. So it should be negative, or it should have electron pair with it and it happily gives away. This would be your nucleophile. What is an electrophile? That is something that likes electrons, likes negative charge. So should be positive.
और फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। अब बताओ, सिंपल हो गया। नो प्रॉब्लम क्रिप्टो, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है, आप लोगों को कोई अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है। मेरा गोल है एज ऑलवेज, फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, हम लोग सब चीज फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे, एंड हेंस यू विल एस इट, देयर इज नो वे यू विल नॉट रिमेंबर इट, है ना, सिंपल है। सो बिकॉज नेगेटिव साइन है तो ये दोनों हो गए न्यूक्लियोफाइल, राइट, एंड दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज, इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस एग्जैक्टली, CH3CO प्लस विल बी एन इलेक्ट्रोफाइल। ये आता कहां से? दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, होता है ना, बेंजीन रिंग प्लस CH3COCl, प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड हीट, यही तो हो रहा है रिएक्शन भाई। इससे बन जाता है AlCl4 माइनस एंड CH3CO प्लस, देयर इज हेटेरोलिटिक क्लीवेज, दिस अटैक, ब्ला ब्ला ब्ला, सब तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लासिफाई दीज रिएक्शंस, आई मतलब इसका मतलब क्या? क्लासिफाई दीज रिएक्शंस इन वन ऑफ द रिएक्शन टाइप, मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, यही होगा ना, और क्या पढ़ा होगा तुमने इस चैप्टर में? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक, यही चीज, तीन चीजें होंगी। एडिशन भी हो सकता है, एडिशन आई डोंट थिंक अभी तक पढ़ा होगा, इसमें एडिशन दिख नहीं रहा है, एडिशन कहीं पे है क्या? हो सकता है एडिशन हो, हाँ एडिशन भी है, हाँ, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, करो, बताओ क्या हुआ इधर, क्या हो गया पीयूष? बोल दी यू बन जिप, व्हाट हैपेंड? तीसरा एडिशन भी है, यस मैंने बोल दिया, अश्विनी SN1 SN2 भी छोड़ दो, हम लोग करेंगे, डोंट वरी, विल डू दैट लेटर ऑन। एनसीईआरटी में जो हम सिर्फ अभी वही कर रहे हैं, SN2 SN1 SN2, ठीक है, ठीक है। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, राइट। पहले न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करो, न्यूक्लियोफाइल मुझे दो दिख रहे हैं, ये दोनों है न्यूक्लियोफाइल, तो बोथ ऑफ दीज आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओ नो, बट दिस इज नॉट सब्स्टिट्यूशन, ये तो हो गया एलिमिनेशन। स्ट्रॉन्ग बेस एंड हीट, यूजुअली स्ट्रॉन्ग बेस और हीट होता है तब एलिमिनेशन हो जाता है, राइट राइट राइट। सो दिस वन इज एलिमिनेशन, पहला वाला हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और तीसरा वाला हो गया एलिमिनेशन। और ध्यान से देखो, ये वाला भी टेक्निकली न्यूक्लियोफिलिक ही है ना, बिकॉज यू गॉट Br माइनस, दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियोफिलिक, बट दिस इज रियली वियर्ड, लाइक लुक एट दिस, CH3C CH2OH एंड देन बीच में ब्रोमीन भाई साहब जाके बैठ गए, व्हाट इज हैपनिंग हियर? यू आर सेइंग वन इज SN, ओके ओके, वन इज न्यूक्लियोफिलिक, ओके कूल कूल कूल, 3 इज एलिमिनेशन, बिल्कुल सही, B इज एडिशन, B इज एडिशन। लास्ट वाले में कुछ फंकी हो रहा है, ठीक है, इसलिए वो मैंने अलग से लिखा है, लास्ट वाले में मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, अरे बाप रे, मिथाइल शिफ्ट क्या भला है? देखो, दिस इज व्हाट you've got, राइट, एंड a tertiary cation is really stable, but the problem is this, it already has all the bonds it can form, ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए बैठा है, तो मैं ब्रोमीन अगर इसमें डालना भी चाहूं, इट वांट्स टू कम हियर, हाउ डज इट डू दैट? इट डज दैट बाय दिस गाय गोइंग हियर, ठीक है, दैट्स व्हाट द मिथाइल शिफ्ट इज ऑल अबाउट। सो what happens, and I know this is a very crude way of saying it, but this is it, you get bromine here and CH2 CH3, इसको मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं। if something is forming a carbocation, which means कि it is thermodynamically limited, मतलब उसको बहुत टाइम है लाइफ में, बहुत टाइम है, आराम से कर रहा है ताकि लोएस्ट एनर्जी स्टेट बनाए, तब रिएक्शन डी होगा। मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, they happen when you get a stable cation, and when does that happen? When the reaction has enough time to happen, जल्दी से नहीं होता है, right? Quick nucleophilic attack, that is kinetically stable,
ये है थर्मोडायनेमिक स्टेबल, मतलब कार्बोकेटायन आराम से बन रहा है, ठीक है। ऑल राइट, लवली लवली लवली। क्रिप्टो, तीर्थराज, सुपर डुपर, पंपा, अश्विनी, पीयूष, थैंक यू फॉर ऑल योर इनपुट्स। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आगे बढ़ा जाए। What is, this is now the third part of this chapter, isomerism. What is the relationship between the members of following pairs of structures? Are they structural or geometrical isomers or resonance contributors? Resonance contributor मतलब कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन आगे पीछे होते हैं। नहीं, what is resonance contributor? हाँ, इलेक्ट्रॉन आगे पीछे होते हैं, बाकी कुछ नहीं बदलता है। Resonance contributor मतलब the bonds do not change, the bonds are the same, it's just the single bond, double bond बदल सकता है, but atoms की positions they don't change. Isomerism में the atom's physical position changes, like for instance देखो physical position बदल गई, ये D ऊपर, ये D नीचे, ये यहाँ पे O इधर, this is change in physical position. Okay, so these must be isomers. While in the last one, all you're doing, and you know how this works, right? You take these guys, these electrons go here. Okay, electron हमेशा कहाँ जाता है? शुरू होता है जहां से electrons है, and it goes to the final destination, which is the positive charge on this oxygen. This is not very stable, the positive charge on this guy. So when this happens, these electrons, दोनों electron चले गए, तो ये positive charge चला गया, इधर electron आ गया. Here this gets a plus charge because electrons यही bond से चले गए. So this looks like, the last one looks like पक्का है resonance. अब इन दोनों क्या हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। ये स्ट्रक्चरल है, स्पेसिफिकली पोजीशन आइसोमर है। कीटोन becomes a ketone, 2 ketone becomes a 3 ketone, है ना। पेंट 3 on, पेंट 2 on becomes पेंट 3 on, या इसको स्ट्रक्चरल बोल सकते हैं। इट कैन बी कॉल्ड एज पोजीशन एज वेल एज मेटामेरिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। हियर बिकॉज एसेंशियली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द ओ, मतलब कि O के लेफ्ट में और राइट में पहले कुछ अलग था, अलग था। दिस इज मेटामर्स, ओके, दिस इज मेटामेरिज्म। एंड पोजीशन इज क्या? पोजीशन 2 से 3 पे चला गया, दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। प्लीज रीड मेटामेरिज्म, sometimes can also be position isomerism but not always be the case. Okay, let me read your comments. The weird noise coming from somewhere, I can't. Oh, that's the fan. Okay, never mind. A is metamerism, says cryptography. Lovely. यही बोल रहे थे कि पोजीशन और मेटामेरिज्म दोनों हो जाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म एज वेल एज मेटा, इज द सेम थिंग। तीर्थराज, बी इज सिस ट्रांस आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल। अश्विनी, लवली, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं रेजोनेंस में, बी सिस ट्रांस, ओके ओके, डी इज रेजोनेंस, लवली। सर सी में कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्जुगेशन है? What do you mean by कौन सी conjugation है, Ashwini? I did not understand that. I have no idea what you're talking about. FMCP rule? Yeah, no clue what you're talking about, dude. Maybe the other students over here can help you out. I don't recommend. I know coaching में बहुत extra बहुत चीजें पढ़ाई जाती हैं, and most of them are tricks that may not be relevant to day-to-day चीजें जो आजकल चल रही हैं. So मेरा suggestion ये है कि NCERT से पढ़ो, खुश रहो. Yeah. So I have no idea what that FMCP rule is. If somebody here knows, please tell them. Okay, इधर क्या है? D on opposite side, D on same side. So this is trans and cis, right? Cis है ये वाला, नहीं, cis है ये वाला, trans है ये वाला, geometric isomerism. Last one, as I've told you, is resonance. All right, cool. Let's go on to the next question. Explain in terms of inductive and electromeric effects. Electromeric क्या बला होती है भाई? Which electron displacement effect explains the following correct orders of acidity on carboxylic acid? ये सवाल इतनी बार आ चुका है ना जेई मेन में और नीट में कि आपको प्लीज यार, यू मस्ट स्टडी दिस, यू कैन नॉट बंक दिस पार्ट. Don't I talk with Nitika? Of course I talk with Nitika ji. Why won't I talk with her? Crypto, I was so random, bro. I have no bro, that was so funny, Crypto. नहीं, तुम लोग पढ़ाई करना है तो क्या करना है, तो पढ़ लो. F stands for functional, P stands for position, C for chain, M stands for metamerism. Whoa, super duper. Okay, cool. FMCP is the isomers की priority. Okay, so functional सबसे ज्यादा, फिर position, फिर chain और फिर metamerism. ठीक है भाई साहब, as you say. Okay, cool. ठीक है. Thank you. Thank you. Okay. अश्विनी, C में कौन सी conjugation है? It's resonance, right? So it's not isomerism. I hope that helps. Okay, इसके बारे में बात करते हैं. Pampa is saying minus I effect. Why is Pampa? Why is she saying minus I effect?
What is this I effect? I मतलब inductive. What is it? Inductive. It's a permanent effect. It's pulling electrons towards itself. So since वो अपनी तरफ खींच रहा है इसलिए माइनस. अगर दे रहा होता इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, it will be plus. It is minus I for sure. Yeah, pulls electrons. And since यहाँ पे 3 क्लोरीन है, सबसे ज्यादा भारी है ये. Yeah, and usually it's shown by X, which is halogens. Usually. It could also be oxygen or sulfur, or any of these other guys. But obviously halogen is more than the others. Okay. What about the next part? This is interesting. Now in these cases, exactly ulta hota hai. These guys are push. 3 pushes. Here you have 2 pushes. Here there is 1 push. So this is going to be a plus I effect. Right? This is a permanent displacement of sigma electrons. Yeah. If you want to know the actual definition, it is the permanent displacement of sigma electrons. Okay? This is a plus I effect, the second one. Cool. And what is electromagnetic effect? It is the transfer of pi electrons directly. It's not been shown by anything over here. यहाँ पे electromagnetic की कोई बात नहीं हो रही है. ठीक है? Cool. Now, what is the idea here? ये strong क्यों है? Why is it strong? Let's talk about that. हमने inductive वो सब तो बता दिया, but why is it strong? If I pull electrons toward itself, जो CO minus ion है, that's going to be stable because I've pulled electrons away. Now I'm pushing electrons, which I'm making it more negative by pushing electrons. So that makes it unstable. ठीक है? और अगर ये stable है, मतलब the bond is easy to break. If a bond is easy to break, मतलब H plus मतलब acid बन गया. ये सबसे जरूरी पार्ट है. A lot of you study the inductive, तुरंत आप लोग बता देते हो, but acid क्यों बन रहा है वो थोड़ा सोचना पड़ेगा. This is the most important part. Okay? All right. EWG, EDG. Cool. If that helps you, good. But मेरा सजेशन है भाई मत करो, बस ध्यान से मत करो. रोशन, परवीन, FTS के पेपर का सोल्यूशन दीजिए. Didn't you already get that? आकाश की आप बात कर रहे हो क्या? If you're talking about the Aakash things, then you can get that. Baker Nathan effects. Piyush, now feel like you show it off. It's good. अच्छी बात है. How don't I know the FMCB rule? Because I don't care crypto. The goal is to read a good book and be able to answer questions. कोचिंग में जो पढ़ाते हैं बहुत रैंडम चीजें बहुत बार पढ़ाते हैं. हर चीज जरूरी नहीं होती है. ठीक है? जरूरी वो होता है जो बुक में लिखा है, क्योंकि उसी से सवाल आएगा. All right. Let's go to the next question. Now we go on to the last part of this thing, where we talk about separation techniques. I have time, बहुत time है. Separation techniques की बात करते हैं. Describe the method which can be used to separate two compounds with different solubilities in a solvent S. Different solubilities. So think about it like this. मैंने पानी में कंपाउंड A डाला, यानी पानी में दूसरा हमने सॉल्यूशन डाला. Solubility अलग है. पानी में डालना, first thing you think is distillation. Distillation works when you have different boiling points, different volatility, right? And that works for two liquids. Here I'm talking about two components with different solubilities. So those solids, think about two solids that have different solubilities. How do you solve this? कैसे करें? Crystallization, Piyush, exactly. Fractional crystallization, ठीक है? मतलब क्या? मतलब आप बहुत गर्म करेंगे, but not too hot. You heat it to a point, maybe where one thing dissolves properly, the other one starts crystallizing out. Like you heat everything up, then you start cooling it down. Now you reach a point where one substance crystallizes out, because solubility changes with temperature, right? Solubility is a function of temperature, right? So when I start cooling it down, जो कम soluble है वो निकलने लगता है. Okay, great. Then again you concentrated second one, ये पूरा निकल गया, then इसको थोड़ा concentrate करो. Concentrate किया, फिर उसको जो है फिर से ठंडा करो, and that's how you crystallize. This is pretty awesome actually. If you have, I think engineering में तो first year chemistry में ये labs होती हैं, where you have to get amazing crystals of organic compound and stuff. I'm not sure doctory में आप लोग ये सब करते हैं, but होता ही होगा, right? You must have some sort of क्या forensic science, I think. अगर forensics के कुछ electives हैं, then maybe in that you will have all of this. Okay, so these are the steps. पहले saturate करो, heat करो, filter करो, then cool करो, less soluble पहले निकल जाएगा, वही सब मैं बोल रहा था आपको. Lastly, the more concentrated thing is called the mother liquor, and that is concentrated again, and then you cool, isolate, and dry. These are the steps to do this. Okay, cool.
That's that. Okay. Now, there are two methods in which you can figure out the estimation of nitrogen. One is called the Dumas method, the other is Geldar's method. इन दोनों में फर्क क्या है? किसी को मालूम है? प्योरिफिकेशन में टॉपिक में कंफ्यूजन है भाई. एनसीईआरटी पढ़ ले यार अश्विनी. सबसे आसान है. फोरेंसिक, यस तीतराज, फोरेंसिक मेडिसिन. हैव यू गाइस सीन दिस शो? फोरेंसिक से मुझे याद आया यार, सीएसआई, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, बचपन में आता था. आप लोग ने नहीं देखा होगा. सीएसआई मायामी, दैट यूज्ड टू बी द फन वन. एनीवे, differentiate between the principle of estimation nitrogen in organic compound by Dumas and Geldar's method. Purification टॉपिक में कंफ्यूजन इसलिए अश्विनी कोई पढ़ाता नहीं है ऑनलाइन. यू हैव टू रीड अ टेक्स्ट बुक. आई अंडरस्टैंड क्यों कंफ्यूजन है. क्योंकि सी देयर इज अ हाई लाइक्लीहुड कि आपने इसको एक्चुअली लैब में नहीं किया होगा, बिकॉज स्कूल लैब में ये सब नहीं कराते हैं. एंड मोस्ट पीपल डोंट टीच इट ऑल्सो. बोलते हैं अरे यार तुम एनसीईआरटी पढ़ लेना, और कोई पढ़ता नहीं है, इसलिए मुश्किल होती है लोगों को इसमें. बट सवाल इसमें हमेशा आते हैं आजकल. एनएमसी ने बोला भी कि भाई ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आना ही है. सो प्लीज रीड द एनसीईआरटी, दैट्स द ओनली वे आउट. एनसीईआरटी लैब मैनुअल पढ़ो आप, ठीक है. क्वेश्चंस के लिए आई एम हियर फॉर यू. या आई हैव डन सम थ्योरी सेशंस. आई थिंक नितिका हैड डन पीओसी के सेशंस बिफोर दिस आल्सो, सो देयर लॉट्स हेल्प. सीआईडी देवांशी. सीआईडी, या सीआईडी जरूर. क्यों आंसर नहीं बता रहा है? डुमा में वैलिड में जेल्डाल बहुत जगह वैलिड नहीं, जैसे अजोनाइट्रोपिरोल पिरिडीन. ओ पीयूष, अजोनाइट्रोपिरोल पिरिडीन. ओके, व्हाई इज दैट पीयूष? यू हिट द नेल ऑन द हेड. बट क्यों? बिकॉज ऑफ द वे वी एस्टिमेट इट. ओके, you make in Duma method, Duma is the same thing, right? You don't pronounce yes. You take a nitrogen containing compound, you react with copper oxide, and then what you get is just pure awesome nitrogen. Yeah. There are some traces of nitrogen oxides which are written as NOx. Usko, if you put it over a hot copper bed, they also become N2. They get reduced. So this is a redox reaction, right? इसको ध्यान से देखो. This is a redox reaction, right? Copper oxide is getting reduced, N is getting oxidized. Well, now -3 में normally oxygen change होता है ना. Then you treat it with concentrated H2SO4 and you get NH4H2SO4. This is what you use to estimate titration के साथ. This is why the whole azo business does not work out. Titration से अमोनिया निकलती है, which you can, get, not titration, sorry, should not have been titration there. That's the other method. Here, you basically you physically get ammonia and you measure कितना ammonia निकला है. You measure the amount of ammonia, which is the gas directly. All right, cool. Why does it not work for azo and the other things? Because 4-year MBBS में है. Oh, forensic, okay. Organic, inorganic substance with nitrogen content derivative Geldal. Okay, all right. We're still talking about Dumas rule right now. This guy right here is titrated against an alkali, and what you get finally is this. So why do these other things not work? Yeah, nitro compounds, azo compounds, and अगर nitrogen ring में ये सब काम नहीं करता है, because the first step, this redox will not work. Redox, we'll use a different color to write this here. कौन सा color use किया जाए? Why? Because no redox reaction. ठीक है, cool. Let's ditch Geldar's method in the interest of time. You guys please read it up. ठीक है, I've just gone a little bit of detail about this. I have a few more questions for you. Let's solve that and let's see. उसके बाद अगर time हो तो we'll come back to this. Okay. Next question. Why is nitric acid added to sodium extract before adding silver nitrate for testing halogens? Second year में है तीतराज. Lovely. By the way, on the Telegram group, I have not given you this thing right now. Let me quickly give you the link to the whatchamacallit. On the Telegram group, there were some students who asked questions. They wanted to know. I can just share my screen with you. It will be easy to do that. Since आप लोग MBBS की बात कर रहे हो, a little bit of a detour. Hold on. Career stuff. Okay, cool. Can you see my screen right now? Probably not. How do I make you see my screen? This is going to be a little hard. 1 second. So a lot of students were asking me questions about life doctory में, and I was like, bro, मैंने तो engineering की है, मैं कहाँ से पता करूँ? But I have some really close friends who happen to be doctors, and there are some very good colleges in Bangalore. Some of them are in Bangalore, some of them are abroad. So I spoke to one such friend, and they gave me some really interesting answers to these questions. So I posted this on Telegram.
because Telegram is the only place that lets you post such long responses. If you find this to be useful, the link to the group is in the thing there itself. You can check it out. I'll tell you what I'm talking about. Hold on. Telegram. Okay. Is my chat visible? Okay. Yeah, my chat should be visible right now. No? Okay. Now it should be visible. Okay. How do I zoom into this? Can I make this larger? Settings, default interface scale. Whoa. This is going to look funny. Cheapers. Do you see that now? Now, career stuff. Okay. Cool. Yeah. Here are the questions asked by the way, since people are asking, right? It's just right behind me. But try and take this a bit. That did not help. I'll go to the other side. Roko. Yeah, this is complicated for me to do because I have small screens. But I'll try. Roko. Here I am on the other side. Now you will see this, right? So the first question was, how's the work pressure? Blah, blah, blah. There's a lot of, pretty awesome comments that this is a very experienced anesthesiologist in Bangalore who's given their personal views on this, hospital policies, even ethical things. I really like these questions. Prescribe more diagnostic tests are required. Can a hospital pressurize you like bosses? MNC, the doctors are underpaid. Very, very cool questions. So anyway, come check out the Telegram group that I've shared. You can join that and maybe you can read this in detail. All right, cool. Since you guys are talking about 4 years and 2 years and 5 years, आप लोग ये सब बात कर रहे थे तो we spoke about that. Shockwave, how to find acidic hydrogen? Shockwave, to find acidic hydrogen, you have to know the pKa value. अगर pKa value उसकी कम है तो it's strongly acidic. Not strongly, just say acidic. ठीक है? That's it. That's the only way to do it. There's no other way to do it. Okay, इसका कोई आंसर नहीं बता रहा है. Hey Piyush, thank you. दोनों Simpsons I think. Both my things are Simpsons. Wait, what is that? What is that? What? Hold on. Oh, that's me. I came to the other side. Okay, let me move myself. That's better. That was my screen. Okay. Yeah, क्यों डालते हैं इसमें? नाइट्रिक एसिड क्यों डालते हैं? Before adding silver nitrate for testing halogens. कोई बता नहीं रहा इसका आंसर? ठीक है. Let me go ahead and tell you. If I have a cyanide containing compound or I have sulfide, इन दोनों को नाइट्रिक एसिड हटा देता है. Yeah, remember this is an oxidizing acid, but here it's literally just doing double displacement. Okay, so please don't get confused. It cannot really, oxidize these guys to anything further right now. All it's doing is removing them from the solution. So all you're left with are halogens. Okay? That's why you add HNO3. You don't know this, that's okay. It's just a theoretical idea. Remember, what am I doing for you here? This is not some fancy question I have made up. ये NCERT का सवाल है. ठीक है? NCERT सब्जेक्ट का सवाल है. पीयूष, NCERT पढ़ो. You're a brilliant student. You've got so many. You're one of the first students to answer every question. So you've got things sorted. But ये थोड़ा डिटेल में जाना जरूरी है. Especially 1 महीना 2 महीना बाकी है ना. इसी डिटेल में set you apart from everybody else. Please read the NCERT. Okay. Cool. It is an oxidizing agent. I agree. But here it's literally just removing it from the solution. It's removing cyanide and sulfide, right? It's removing them from the solution. And halogen बच जाता है for it to get tested. Okay, let's take a quick question. 0.3780 gram of an organic fluoro compound gave some amount of silver chloride. In Carrier's का estimation, calculate the percentage of fluorine present in the compound. Who knows how to do this one? ये लग रहा है डरावना. Trust me, this is the easiest question on this planet. मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ. लग के वाला कि ओ भाई Carrier's method क्या है? तो मैंने पढ़ा ही नहीं है. What is Carrier's? I don't know who Carrier's is. What are we talking about? But ऐसा कुछ नहीं है. Piyush, I know you are in the habit of watching lectures, but trust me, bro, NCERT पढ़ ले. मैंने कोई लेक्चर बनाया नहीं. अगर मैंने बनाए थे तो I would have shared with you. The organic ones I have done. ऊपर है जो मैंने दिया है. I'll also pin the comment. उसमें I have done halo and I have done stereoisomerism in detail. You can check those two. उसके अलावा मैंने YouTube पे तो नहीं पढ़ाया. Yeah.
पर्सेंटेज नाइट्रोजन बेरियम फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्ट, इफ यू लुकिंग फॉर सॉल्ट एनालिसिस दैट आई हैव डन, सॉल्ट एनालिसिस मैंने प्रॉपर्ली किया है, वो आप देख सकते हो, अदरवाइज एनसीईआरटी पढ़ लो। हाउ डू यू डू दिस, इसको कैसे किया जाए, आसान है, सब लोग बहुत शांत हो गए, जैसे ही मैथ्स आता सब लोग शांत हो जाते हैं। देखो यार सिंपल सी बात है, 0.5740 ग्राम है, this organic compound CXHYNZClM does something and gets AgCl, ठीक है, cool. Now I want to know कितने मोल, I know 0.5740 ग्राम है, I know 0.3780 ग्राम, I know both of these things. If I get moles of this, I can then get mole of chloride. Once I get mole of fluoride, then I get mass of chloride. Once I get mass of chloride, I divide by this, I get percentage. खत्म भाई, और कुछ नहीं है. So first step, get moles of AgCl. Simple सा है, 0.5740 divided by molar mass of AgCl. जितना मोल होगा AgCl का, mole of AgCl will be equal to mole of fluoride. क्यों यार, एक AgCl में एक ही तो होता है Cl atom. That's all. So write that here. 108 is Ag, 35.5 is Cl. दोनों को ऐड करो into 35.5. क्यों? Because I want to get the mass of chlorine यार. This is mole of AgCl slash chloride. This is gram per mole of Cl itself. तो इसका मोल into molar mass will give me mass of chlorine. बस हो गया. इसका मास कितना हुआ? 0.142. Divide by this into 100. That is the answer, 37.57%. खत्म 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 खत्म. Any doubts on this? This goes too quickly. अगर ये जल्दी हो गया तो बता दो. Don't worry about the math. Okay? Maths जो आप लोग कर लेना. But the idea, do you understand the idea behind this? कि कैसे हमने किया? इतने confidently, how did we do this? I don't know what is Carrier's method, but I know कि AgCl में एक एटम होता है क्लोरीन का. That is the basis of solving this question. Okay? 0.5740 ग्राम of AgCl मतलब कितने मोल AgCl डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ AgCl. ओके, कितना मास ऑफ क्लोरीन मल्टीप्लाई बाय 30.5.5. ओके, दैट इज जस्ट, वो कहां आया मास, आई एम जस्ट डूइंग मास बैलेंस. मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. तो शुरुआत में जो मास था इस बड़े से कंपाउंड में और फाइनल में जो इसमें आया सेम क्लोरीन है, और कहीं से तो क्लोरीन आया नहीं है. आई हैवंट एडेड एनीथिंग, सो आई कैन डिवाइड दैट मास बाय दिस इनटू 100. दैट्स द मेन आइडिया. ठीक है? एनी डाउट्स? सब लोग बहुत शांत हो गए. एनी डाउट्स ऑन दिस? या अरे पीयूष, क्वेश्चन डरावना नहीं है. आपको डरावना इससे लग रहा है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है. एंड डोंट टेक दिस रॉन्ग वे. डरावना तभी लगता है जब कॉन्फिडेंस का इशू होता है. एंड इट्स नॉट इवन पढ़ा नहीं, इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, इट इज जस्ट अ कॉन्फिडेंस थिंग. अगर फेमिलियरिटी नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा. तो फेमिलियर आप हो गए, अब आप फेमिलियर हो गए तो आगे नहीं होगा, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा आपका, है ना? लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. ओके, इट वाज इजी. ओके, ग्रेट. ऑल राइट. In the organic compound blah blah blah, the pair of hybridized orbitals involved in the formation of C2, C3, ये वाला बहुत सिंपल नहीं हो गया? चलो बता दो इसका आंसर. अच्छा, एक और सवाल है, इसके बाद एक और सवाल है. दिस एंड एक और. फर्स्ट प्रिंसिपल, एग्जैक्टली अश्विनी, थैंक यू. फर्स्ट प्रिंसिपल. वन मोर क्वेश्चन, लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन. ये वाला तो बहुत सिंपल लग गया मुझे, बट ठीक है. C2 C3. अब ये C2 C3 है कहां? काउंट कहां से करूं मैं? 1 2 3 4 5 6, और डू आई गो 1 2 3 4 5 6? कैसे काउंट कर? पहले काउंटिंग तो बता दो दोस्तों. लेफ्ट से करे काउंट कि राइट से करे काउंट? C sp2 sp3. हाय प्रियांशु, व्हाट्स हैपनिंग? शॉकवेव, अरे आपका आंसर तो मैं दे चुका हूं. पीके निकालो यार. ऑलराइट प्रियांशु, ओके. pKa tells you acidity of hydrogen. Okay, you have many different hydrogen, सबके pK values क्या है वही होगा. That's the only way. No problem Priyanshu, no tension. Kartikeya says C. So if I count 1 2 3 4 5 6, then this is the right answer. What if I count the other way around? 1 2 3, then it is Sp and sp3. If I count this way, उल्टा, पता नहीं क्यों अरबिक उल्टा लिखी जाती है ना, तो उल्टा काउंट कर लेते हैं.
खैर चलो, वी विल काउंट सीधा, वी विल काउंट 1 2 3 4 5 6. ओके, sp2 इज लाइक दिस, sp3 इज लाइक दिस, दोनों कंबाइन होके बन गए. ये क्या है? डी नहीं होगा भाई, मेरे सी होगा. ये डी क्यों हरा हो रहा है? रुको. हरा गलत वाला हो गया, हरा सही वाले को होना चाहिए था. Let's fix the green and then we'll go on to the last question for the day. You've all been very patient. Thank you for sticking around. You're all lovely students. एक second, give me a second. These small things bug me. 108, 108. What a lovely number. Home and change and khulda. All right. sp2, sp3. Let's do that. Okay, last one for the day. Which of these carbocations is more stable? कोई हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर रहा था, लगाओ हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें लगेगा हाइपर कॉन्जुगेशन. somebody was talking about that. No super left. आयुपैक, प्रियांशु, आयुपैक बहुत कर लिया यार, पहले के 20 मिनट आयुपैक ही किया प्रियांशु, देख लेना. लेफ्ट लेफ्ट शॉकवेव, थैंक यू थैंक यू. लेफ्ट से स्टार्ट करना है प्रियांशु, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ओके, ट्रिपल बॉन्ड पहले आएगा अश्विनी, देन बी शुड बी. ओके, ऑलराइट ऑलराइट. 12th में बहुत मजा आ रहा है, केम इज सुपर फन. गुड प्रियांशु, गुड. व्हाट आर यू स्टडीइंग? आर यू स्टडीइंग किनेटिक्स और क्या पढ़ रहे हो? तीर्थराज सेज बी, सिंपल सा है. 9 अल्फा हाइड्रोजन. प्रियांशु गिविंग द लॉजिक आल्सो. ऑल ऑफ, देखो, ऑल आर सैचुरेटेड. अगर अनसैचुरेटेड सोचना पड़ता. अगर इससे एक लेवल और सीखना है ना, tomorrow I'm doing the same topic for the JEE students at 6:30 p.m. There we will do exemplar questions. That will be one level above this. वहां आके देख लेना. अभी के लिए this is it. This is the maximum we are going to do. All of them are saturated. अब बस इसको देख लो. Yeah. How do you check something is, stable or not? ये जो plus charge है, that gets stabilized by this tiny electron over here and this empty pi orbital, etc., etc. Right? Delocalization यहां से होता है. तो जितने ज्यादा H atoms, उतना hybridization. Sorry, hyper conjugation. That's it. That's it. So as our friends have correctly pointed out, there are 9 alpha hydrogens, and hence this is the most stable, and B is the right answer. Same question did in test series. That's great. Priyanshu, Piyush, Raj Singh ji, the answer should be B, right, and not the others. Okay, थोड़ा सोच लो आराम से. Tomorrow Shivratri, super duper. आज मेरा fast है. Today is Ekadashi. I have successfully managed to fast somehow. Fasting is awesome in Desi festivals because it leads to feasting afterwards. Yeah, sabudana khichdi and what do you call it? Gajar ka halwa, bro. Gajar ka halwa. Yash, thank you for the positive feedback. If there's anything I can do better, please let me know. On the pinned comments, you will find my other videos, and you can reach out to me on I Teach Chem or on Telegram or on Discord. That's all I had planned for you today. I'll see you guys. कब मिलेंगे आपसे? आपसे हम लोग मिलेंगे Saturday को. If you want to check out a higher level of these questions, कल मिलते हैं 6:30 पे on the JEE channel. If you want to continue doing more of NEET content, I'm going to be doing hydrocarbons on Saturday at 4:30 p.m. ठीक है, मिलते हैं. You're doing coordination, Priyanshu. Coordination है next यहाँ पे. Coordination, Priyanshu, we're going to do on 11th and on 12th. 11th को JEE पे, 12th को NEET पे. Thank you, Piyush. Thank you so much. Yash, yeah, fasting, I like it. It's good. Coordination questions are cute. Why is fasting good for health? Yeah, that's an interesting question. Well, you got to try to see how it works out for you. Philosophy तो बहुत है, but practice भी करना जरूरी है. खुद करके देखो, and you'll see the benefits of it. Practical तो हम लोग philosophy तो बात करते रहेंगे. We'll chat on Telegram if you guys want. All right, bye. Thank you all for your time. Have a great evening. आपसे मिलता हूँ Saturday को. अगर आपको और देखना है JEE के सेशंस, कल आ जाएगा 6:30 बजे मिलते हैं द JEE चैनल. बाय, सी यू ऑल. थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम. बाय, टाटा.